From its inception in 1965, NTGB's purpose and vision remain constant: to serve India's small and marginal farmers and change the landscape of rural India. तो जब भी ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज में हम खाना बनाते हैं और उसके ऊपर अमूल चीज़ आ जाए तो फिर मज़ा आ जाता है. So whenever we trek, Amul treks with us. After I started putting Amul mithai meat in my pongala, it is super. जब मैं लस्सी पींदा तो मेरा मन बल्ले बल्ले करता. Milk, giver of life and liberty, thanks to a revolution called Amul. The year 1946, Gujarat, the seat of an epic struggle. The air is rife with a cry for liberation. A revolution is in the making. A young man reared in the Gandhian tradition is in the thick of a nationalist movement, organizing farmers. यहीं से शुरू हुआ इतिहास. वो देख चला आ रहा है. हाँ, अपनो त्रिभुवन भाई पटेल लेके किसानों की फरियाद जा रहा वल्लभ भाई पटेल के पास. इसका तो एक ही रास्ता है त्रिभुवन. ओल्सन में काढ़ी को. डेयरी तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, तुम लोगों की अपनी कोऑपरेटिव डेयरी, ताकि मुनाफा बिचौलियों की जेब के बदले तुम्हारी जेब तक पहुंचे. Born out of a dream for the economic liberation of the farmers, the protest movement gained strength and matured into a mass movement. The battle lines were drawn, the mighty British Empire against a handful of farmers. तुम सब लोग भी अच्छी तरह से सोच लो. अगर तुम लोग जोखिम और नुकसान उठाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं. वल्लभ भाई, रोज रोज के मरने से एक दिन का मरना बेहतर. This revolutionary idea brought under its fold visionaries like Sardar Patel, the Iron Man of India, and Morarji Desai, then freedom fighter and later to be Prime Minister of India. भाइयों, पहला प्रस्ताव है कि खेड़ा जिले के हर एक गांव में यानी कि कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी बनाई जाएगी. इन सोसाइटीज की आनंद में एक डिस्ट्रिक्ट यूनियन बनाई जाएगी. और तीसरा प्रस्ताव है कि इस यूनियन का मेंबर बनने के लिए किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय और ऊंच नीच का बंधन नहीं होगा. हमारा चौथा और आखिरी प्रस्ताव है, हमारी एक शर्त कि बंबई की सरकार को हमसे यानी कि हमारी डेयरी से दूध लेने के लिए राजी होना होगा. अगर वो हमसे दूध लेने के लिए राजी नहीं होते तो हम इसके खिलाफ एक आंदोलन करेंगे. बिना सहकार नहीं उद्धार. The call for a full-scale rebellion thundered through the heart of Gujarat. Milk collection came to a grinding halt. The Polson dairy was on the verge of collapse. On the 15th day of the strike, the British had to buckle. ये
Indian bullshit, sir. May I just request people who are standing at the back to please find a seat for yourself. In case you are not able to find a seat, you requested to please move in hall number 8 where the arrangements have been made. There's a live screening also going to be happening there. हमारे सभी वॉलंटियर्स जो पीछे की तरफ हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जो लोग पीछे की तरफ खड़े हैं उन्हें आप प्लीज़ अशर करें हॉल नंबर 8 की तरफ. वहाँ पर भी लाइव स्क्रीनिंग की जाएगी. कोई भी इस हॉल में खड़ा ना रहे. आपसे निवेदन है कि यहाँ पर अपनी सीट एक बारी ढूंढ लें, मार्क कर लें और सुनिश्चित कर लें. इन केस आपको सीट यहाँ पर नहीं मिलती है, आप हॉल नंबर 8 की तरफ जाएं. हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपको गाइड कर देंगे. वहाँ पर भी आप ये पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं. जैसे कि आप जानते हैं, अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, जिनके करकमलों द्वारा इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया जाएगा. माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन का समय इस परिसर में 10:30 का है. प्रधानमंत्री जी सबसे पहले आते हुए बाहर जो प्रदर्शनी दूसरे हॉल में आयोजित की गई है उसका यहाँ पर अवलोकन करेंगे. उसके बाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस हॉल में 10:50 पर हमारे साथ सम्मिलित होंगे. उनके साथ साथ श्री योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी होंगे और अन्य हमारे अतिथिगण अधिकारीगण इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे. माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा कार्यक्रम कुछ 1 घंटे का रहेगा. The Honorable Prime Minister, ladies and gentlemen, is going to be with us for an hour. So as he joins us at 10:50 in the hall, he's going to be leaving close to 11:45, just after his address. But we are going to be continuing with our inaugural session, where once Prime Minister leaves, we'll be just taking a little, not a break as such, just a little pause for some of the dignitaries on the dais. They are going to be accompanying the Honorable Prime Minister, seeing him off. And then once they are back, we are going to be resuming with the session, wherein we have the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, who's going to be addressing us. And then we are going to be finally closing with the inaugural session at 12 or 12:10, depending on how good we are to start once Honorable Prime Minister leaves. But as such, there is no break once Prime Minister leaves, so you're requested to remain at your respective seats. Towards that, we request a lot of support and your patience so that you're there in your seats and we can start immediately as Yogi Adityanath ji, the Honorable Chief Minister, joins us after seeing off the Honorable Prime Minister. And post that we have the lunch. As I mentioned to you, the arrangements of lunch have been made in the hall. As you move outside, towards the right hand side is the lunch area. On the left hand side, we have the technical sessions, the hall where we have the technical sessions. And this is the main hall where we have the inaugural session. We have technical session 4 happening here, where Shri Amit Shah ji is going to be joining us, our Home Affairs Minister and the Minister of Cooperation. He joins us for the technical session 4, which is towards the relevance of cooperatives for the dairy sector, wherein we have the distinguished speakers from the other countries also. They are going to be also sharing with us their role models, their perspective on the very relevance of the cooperatives for the dairy sector. That's the session with Shri Amit Shah ji at 6:15, closing by 7:30. Post that we have the cultural evening where we give you the taste of India, followed by dinner. So that's the schedule which we have for the day. The rest of the information, I'm sure you already have the schedule. In case you've not been able to get hold of the schedule, you're requested to kindly download the website, which is IDF WDS 2022.com. You can seek any information on that. There's also a mobile app which you can operate on the iOS and the Android platform. And in case you still require any information, you seek information, you can get in touch with our representative at the help desk outside. As you take your seats, once again a request to have your mobile phones, just keep your mobile phones on the silent mode. People at the back requesting you, if you have not found a seat, please move to hall number 8.
यहाँ पर उपस्थित आयोजकों की तरफ से मैं विमी चौधरी, फैसिलिटेटर ऑफ दिस मीट, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 में, जिसका शुभारंभ अब से थोड़ी देर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे हमारे साथ। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ IDF के प्रेसिडेंट स्पेशली ब्रसेल से हमारे साथ हैं मिस्टर क्रिस्टियानो ब्राज़ेल, वो भी मंचासीन होंगे। साथ साथ हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर महेश शर्मा जी और भी अन्य डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज इस कार्यक्रम के इस पहले सत्र के उद्घाटन सत्र में हमारे साथ शामिल होंगे, जो कि प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ 1 घंटे का रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 10:30 पर है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद वो हमारे साथ सभागार में 10:50 पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद प्रधानमंत्री जी एकदम प्रस्थान करेंगे। थोड़ा सा हमारा कार्यक्रम में विराम लेंगे, ब्रेक नहीं होगी, विराम लेंगे, क्योंकि मंचासीन काफ़ी सारे हमारे जो डिग्निटरीज हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी को बाहर छोड़ते हुए उनको सी ऑफ करने जाएंगे। उनके वापस आने के बाद हम फिर से अपना कार्यक्रम आरंभ करेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी हमें संबोधित करेंगे। Ladies and gentlemen, as you know that the theme which we have for the conference is Dairy for Livelihood and Nutrition, as we focus on this very subject for the global dairy sector. Today, the sessions which we have give you more of a holistic approach. We have in these 4 days 24 technical sessions. We have various experts joining us, both national as well as international. Almost 156 speakers are going to be addressing us in these 4 days. Close to 92 overseas speakers with 64 Indian speakers. Exhibition which has been organized, 110 exhibitors are showcasing the state-of-the-art technologies and products and business models. So it's going to be a great opportunity for all of us to forge alliances, build partnerships, look into opportunities of growth, collaborate with each other, and further contribute to the growth of the dairy sector in our respective countries and to the global dairy industry at large. So today we have a more of a holistic view, perspective. The overall view is going to be shared in the inaugural session and the technical session. We have the IDF Innovation Dairy Awards, which are going to be presented in the evening. That's just a session before Amit Shah ji's session. That's going to be happening in the Rathi Hall. And tomorrow we are going to be focusing on dairy for livelihoods. And day after we have dairy for nutrition. The last day, it's going to be more of the concluding day, summing up the key takeaways from all these 4 days, so that we can plan a way ahead for a more sustainable and a resilient global dairy sector. So we're going to be closing on the 4th day. Apart from that, as I mentioned to you earlier also, it is a great opportunity for India, for this conference is happening in India after 48 long years. It's an opportunity for India to showcase not only the achievements which we have been able to make in the dairy sector, but also highlight and showcase to all of you the richness of our culture, our traditions, our custom, which is reflected in our dances, in our music, in our dialect, in our food. And we try to give you this entire potpourri of that in these 4 days as you enjoy the food during the lunchtime and the dinner time, the cultural evenings which we have organized for all of you. And I hope you get also to visit some of the places during your stay here. Certain places are, in fact, they stand very close to Delhi and close to where we are in Uttar Pradesh. You have Agra very close, so probably you can pay a visit there, and the other states of the country depending on the time which you have. Also
take back some very good souvenirs as a remembrance of your stay in India. I'm sure you're going to be enjoying our rich hospitality. We are able to live up to your expectations, and you have a really good time and an enjoying time in our beautiful country, India. इस अतुल्य भारत में सभी डेलीगेट्स का, ना केवल हमारे अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स जो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, पर राष्ट्रीय डेलीगेट्स भी आपका स्वागत करते हैं, दिल्ली में स्वागत करते हैं, NCR और जहाँ पर हम यहाँ पर हैं गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है, जहाँ पर वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का थोड़ी देर बाद शुभारंभ होने जा रहा है। सभी हमारे महानुभाव, सभी हमारे विशेष अतिथिगण, हमारे प्रतिष्ठित अधिकारीगण जो कि ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, केंद्रीय सरकार से हैं, राज्यों से भी हमारे साथ काफ़ी सारे माननीय ऑफिशियल्स यहाँ पर उपस्थित हैं, अधिकारीगण हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। CEOs डेयरी कंपनीज़ के, उनके साथ साथ उनके कर्मचारी, एम्प्लॉयज़ हमारे साथ हैं, academicians, researchers और सप्लायर्स टू द डेयरी सेक्टर, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं इन 4 दिनों में। तो हम सभी के लिए एक ये मौका है, एक अवसर है अपनी डेयरी इंडस्ट्री, अपने राष्ट्रीय डेयरी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करने का, अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का, और साथ साथ अपनी देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था और इकोनॉमी को, उसकी तरफ भी योगदान देने का। आप सभी का फिर से अभिवादन करते हुए पुनः निवेदन कि आप जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण करें। Would also like to request especially the international delegates, the honorable ambassadors and the other senior officials who are present with us from other countries, in case you're wanting a headset, I believe it's already been extended to you. In case you do not have, you can just raise your hand. I'll request our representatives to hand over the headset to you. For we are going to be having some of the speeches in Hindi, and we have the translation happening. So channel 1 is for Hindi, channel 2 is for English. You're requested once you leave the hall, just leave the headsets on your seats, please. Let me also just apprise you of the distinguished dignitaries who are going to be part of the inaugural session. Apart from the Honorable Prime Minister, as I mentioned, the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh joining us. We have our Honorable Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Shri Purushottam Rupala ji, our Honorable Ministers of State from the Ministry, Dr. L. Murugan and Dr. Sanjeev Balyan. We have our Honorable Members of Parliament, Dr. Mahesh Sharma, who is the Honorable Member of Parliament from the Gautam Buddh Nagar, where we are presently. He, in fact, is a physician by profession. And we have Shri Surendra Singh Nagar, the Honorable Member of Parliament. From IDF, especially joining us from Brussels, Mr. Cristiano Brazil, the Honorable President of the International Dairy Federation. Ms. Caroline Imond, the Director General, International Dairy Federation. We also have Shri Jitendranath Swain, the President of the Indian National Committee. As you know that India is represented in IDF by INC, that's the Indian National Committee, which comprises of 17 members represented by the government, the academia, the industry, the national institutions, and NDDB, the National Dairy Development Board, is its secretariat, and as the secretariat, it coordinates the activities of INC. So we have the President of INC, who's also the Secretary, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, gracing the dais, along with Shri Manish Shah, the Member Secretary, Indian National Committee, IDF. In the audience, ladies and gentlemen, we are really delighted and very grateful to the Honourable Minister from New Zealand joining us, Ms. Faitiri. A very hearty welcome to her. Thank you, ma'am, for gracing the occasion.
The Honorable Ambassador of Brazil present with us, His Excellency Henry Arnaha. Honorable Ambassador of Netherlands, His Excellency Martin Wenden. We also have our Honorable State Ministers joining us, seated in this August gathering, Shri Dharampal Singh, the Honorable Minister of Animal Husbandry and Dairy Development, Government of Uttar Pradesh. Joining us in the August gathering is also Shri Radhakrishna P.K. Patil, the Honorable Minister of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries, Shri Ramlal Jat, the Honorable Minister of Revenue, Government of Rajasthan, and Engineer Teg Taki, the Honorable Minister of Animal Husbandry, Veterinary and Dairy Development, Government of Arunachal Pradesh. Let me also mention to you, ladies and gentlemen, as Honorable Ministers of State join us here on the dais, Dr. Sanjeev Kumar Balyan. He's a veterinarian by qualification, and Dr. El Murugan is a lawyer by profession. So we look forward. They're not going to be addressing us in the inaugural session, but in the later sessions as they join us for their address, we look forward to their expert advice and more of their experience sharing as they address us in the other sessions. KMF strives to excel in three critical factors of business: quality, cost, and delivery. Karnataka Milk Producers Federation has installed precise electronic weighing machines and quality check protocols, as per which the price of the milk is fixed on the spot. The transparency in the system has enabled the organization to gain confidence of the milk producers. KMF has installed bulk milk coolers in the supplying villages, thus saving the time incurred to transport the collected milk to cold storage, thus ensuring the quality of milk. The system of cooling the milk sold by farmers at the spot to 4 degrees centigrade has been incorporated all across Karnataka. Milk is collected from the supplying villagers' insulated tankers, which are used to transport the raw supply to the main manufacturing units. The tanker drivers are made to follow WHO prescribed COVID protocols to ensure safety. Milk from insulated tankers is weighed on computerized weighing machines at the reception dock, where the samples are collected and then sent to the quality maintenance laboratory. Milk samples are tested in the lab for its fat content, density, and contamination, along with microbacteria and viruses. A green signal is given to unload the milk at the processing unit once it's checked for its quality. The milk unloaded from the tanker is then filtered, and with the help of the raw milk chillers, it is cooled at 4 degrees centigrade and stored in insulated raw milk silos. Then it is passed through automatic self-dislodging cream separator to produce different types of milk, considering and controlling the different amounts of fat content to be present in various milk products manufactured by KMF. During this process, the fat and solid content in the milk are standardized and processed in accordance with the demand from the customers. Pasteurized milk is once again checked and certified for its quality and then passed through pipelines to the packing division. The milk packets are placed in clean and sanitized plastic crates and then shifted to cold storage. The
milk products are then loaded into vehicles and distributed throughout the day to the retailers and Nandini shops, thus reaching the consumers fresh and on time. KMF has introduced a range of 140 products varying from milk to other milk products under one of its top brands, Nandini. It is also the industry leader in the sales of UHT milk and largest curd producer and seller in the country. Did you know Nandini ghee is used in the preparation of the renowned mouth-watering prasad, the Tirupati Laddu? KMF can proudly say that the Indian Army prefers Nandini's UHT milk and milk products for their jawans. All the diyas and lamps at Ayodhya are illuminated using Nandini's fragrant ghee. The Federation provides milk to government-aided schools free of cost, ensuring a calcium-rich diet for the students. KMF has also been creating equal opportunities for all members of the society for decades. Its brand motto of spreading wealth of health has become synonymous with assured quality and timely supply of milk and milk products at competitive prices. KMF is currently operating in the liquid milk segment over the entire Ladies and state of gentlemen, Karnataka. just a very humble request to the people who are standing at the back. May I request our volunteers, our representatives, if you can, to please usher the people who are standing at the back, for they have not been able to find a seat. If you can move them in hall number 8. The entire live feed is also happening in hall number 8. We have the screens there. You're not going to be missing anything if you are there. So just a request, nobody should be standing in the hall, please. That's a very humble request from the organizers, from SPG. We just request you, जो लोग साइड में भी खड़े हैं, यदि आपको प्लीज़ सीट नहीं मिली है, आपसे निवेदन है कि आप हॉल नंबर 8 की तरफ प्रस्थान करें. हमारे यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपको गाइड कर देंगे. बाकी लोग जो यहाँ पर हॉल में हैं उनसे निवेदन है, एक बार आप अपनी सीट पर बैठ जाएं, अपनी सीट को सुनिश्चित कर दें, जिससे आपको भी हो गई, आपको सीट यहाँ पर मिल गई है, और नहीं मिलती है तो तब आप हॉल नंबर 8 की तरफ जाकर वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं. We have close to 1,500 plus delegates and participants in these 4 days as we kickstart today. Before that, of course, we've had some bit of meetings with among the dignitaries, but today we officially begin the World Dairy Summit. And just also to mention to you, as we have the cultural evenings, that's going to be, we'll first have dinner, and the dinner is then going to be followed by the cultural evening. Also request to have your mobile phones on the silent mode. Any information which you're seeking, you can please download the website idfwds2022.com, and also the mobile app is there, which is accessible on the Android and the iOS platform. Further information if you're wanting, you can always get in touch with our representatives or the help desk downstairs.
This is the main hall where we have the inaugural session starting in a while. 10:50, the Honorable Prime Minister is expected to be joining us here. After the inauguration of the exhibition, 10:30, Honorable Prime Minister, sir, is going to be arriving in the complex. We have the Honorable Ministers of various countries. As I mentioned, we have close to 300 plus international delegates with us representing USA, EU, Africa, Oceania and Asia. We have the Honorable Ministers from some of the countries, the Honorable Ambassadors joining us especially for this summit in the inaugural session. And then our Honorable State Ministers, the officials from the central government, from the state government, as far as the policy makers and decision makers are concerned. We have the CEOs and the employees of leading national institutions and international institutions, the companies, the suppliers to the dairy industry, the academicians, researchers, the veterinarians, and the other stakeholders across this value chain of the dairy sector. So 1,500 plus delegates. If you're not able to find a seat here, request you to please move to hall number 8. Thank you. Promotes bulk vended milk, better known as token milk, which reduces up to 10 tons of daily plastic consumption in Delhi alone. To cater to the needs of different consumers, Mother Dairy has come up with milk variants for the entire family, using its expertise in dairy technology. They provide a balanced, healthy diet for the children, the future of our country. मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स आप आंख बंद करके यूज कर सकते हैं. I like it because it tastes so good. Mother Dairy's amazing ways of touching lives go beyond supplying milk. Its range of delectable ice creams made from pure milk fat and natural ingredients are admired for their exceptional quality and unforgettable taste. Mother Dairy is also amongst the largest suppliers of a wide variety of fresh dairy products, such as rich, creamy curd, mishti doi, and paneer. Delicious beverages like chaach, lassi, and flavored milks have also been introduced to make milk consumption fun. Encouraged by the success of Mother Dairy milk and dairy products, the Government of India asked Mother Dairy to replicate the same model of fruits and vegetables. That is how Safal was born. Safal quickly became India's first organized F&B retail chain. Sourcing directly from farmers of various states to offer more than 100 varieties of fruits and vegetables throughout the year. The success story continued as it pioneered frozen vegetables in India. All this time, never once deviating from its focus on naturally ripened fruits and fresh vegetables. In 1988, Mother Dairy also introduced Thara edible oils. Started as part of Operation Golden Flow, a market intervention project of NDDB. It has also become the hallmark of trust, purity and taste. Today, Thara is among the leading national players in this segment, with a presence in both refined and filtered categories. To sum up, Mother Dairy is committed to ensuring that safe, hygienic and quality products reach from the farm to your home every day. Mother Dairy is a symbol of trust, reliability, purity and assurance every day. नेस्ले में हम जानते हैं कि सिर्फ एक ही तरीके से सफलता मुमकिन है, वो है पार्टनरशिप से प्रगति। नेस्ले और डेयरी किसानों की मजबूत पार्टनरशिप 60 सालों से भी ज्यादा पुरानी है और यही है जो दोनों को एक साथ आगे ले जा रहा है प्रगति की ओर। इस रिश्ते की शुरुआत हुई 1961 में, जब नेस्ले ने मोगा पंजाब में प्रतिवर्ष 9,000 टन कैपेसिटी वाले दूध के एक कारखाने की स्थापना की।
सिर्फ 66 गांवों से शुरू हुआ ये साथ आज 2400 गांवों तक जा पहुंचा है। नेस्ले ने 1 लाख से भी अधिक डेयरी किसानों के साथ एकजुट हो पशुपालन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दूध के कलेक्शन को बेहतर करने के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम किया है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कारोबार की सफलता की बुनियाद है और इस बात को समझते हुए नेस्ले ने 350 से ज़्यादा ट्यूबवेल और बिजली से चलने वाले पंप लगाकर बुनियादी ढांचे में सुधार किया है। साथ ही दूध की टेस्टिंग और उसके कलेक्शन प्रोसेस को स्वचालित कर कड़े क्वालिटी चेक सिस्टम सेटअप किए हैं ताकि हमारे सभी ग्राहकों को हमेशा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही मिले। हमारे देश में डेयरी फार्मिंग के विकास के लिए महिलाओं ने हमेशा से एक अहम भूमिका निभाई है। यहाँ हमने पार्टनरशिप से प्रगति का एक और कदम उठाते हुए महिला डेयरी फार्मर्स को ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर दिए। हम समझते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा का कितना महत्व है। हमारी आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसी क्षेत्र में किसानों के साथ मिलकर नेस्ले ने कुछ ठोस कदम उठाए। ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को कम करने के लिए हमने 2500 से ज्यादा किसानों की बायोगैस प्रोडक्शन करने में टेक्निकल सहायता की। नेस्ले द्वारा स्थापित 900 से अधिक सोलर पैनल प्रतिदिन स्वच्छ और हरित ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। बायोडायवर्सिटी, मिट्टी की क्वालिटी और उर्वरता को निश्चित करने के लिए किसानों को विविध फसलों के महत्व का संदेश कम्युनिटी एजुकेशन के जरिए पहुंचाया जा रहा है। किसानों के साथ साथ एक और अहम रिश्ता है जो नेस्ले की हर सोच में बसा है, हमारे ग्राहकों का साथ। 100 से भी ज्यादा सालों से हम अपने ग्राहकों का विश्वास और प्यार जीतते आए हैं और आज देश के हर कोने में पहुंचकर हर साल लगभग 600 करोड़ सर्व के साथ हम अपने ग्राहकों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। चाहे वो हो नेस्ले एवरीडे, चाय का परफेक्ट पार्टनर, नेस्ले मिल्कमेड, बनाए हर घर में मीठी मीठी खुशियाँ, नेस्ले A+, डिलिशियस हाई क्वालिटी मिल्क, या आज के युवाओं की फेवरेट रिफ्रेशिंग नेस्कैफे कोल्ड कॉफी रेंज। हम निरंतर इस कोशिश में हैं कि हर तरीके से अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में प्लास्टिक वेस्ट कम कर प्रगति सुरक्षा को बनाए रखें। देश में हम ऐसी पहली कंपनी है जो अपने रेडी टू ड्रिंक पैक से प्लास्टिक स्ट्रॉ को हटा पेपर स्ट्रॉ लाए। ऐसा करने से हम साल में लगभग 30 मिलियन प्लास्टिक स्ट्रॉज कम करने में सफल हुए। एक यूनिक प्रोग्राम के अंतर्गत टेट्रा पैक कंपनी के साथ हुई एक पार्टनरशिप में दूध के कार्टन्स को इकट्ठा कर रिसाइकल किया जाता है और उससे बेंच बनाए जाते हैं जिन्हें जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल में लगाया जा रहा है। किसानों और ग्राहकों के साथ नेस्ले की लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप प्रतीक है प्रगति की। पार्टनरशिप से प्रगति। IDMC was set up in 1978 to manufacture dairy components and equipment and to contribute in moderating their prices. Over time, IDMC's Make in India initiative has led to a significant growth in its manufacturing base and reduced the dependency of the dairy industry on imports. IDMC is a leading manufacturer of tankages, process vessels, plate heat exchangers, flow items, bulk milk coolers, milking machine and key process equipment like continuous butter making machine, ice cream freezers, homogenizers and cup filling machines. We supply, install, test and commission projects in the dairy, pharmaceutical and beverage sector and also offer thermal management systems. IDMC's metal fabrication and machining facilities are spread over approximately 30,000 square meters and are ISO 9001-2015 certified. Our modern manufacturing units are equipped with automatic polishing, water jet cutting, dish spinning
and CNC machines. The design group has contributed to IDMC's growth as well as establishing its quality systems for pressure equipment according to European directives. Our packaging division has the capacity to manufacture about 17,000 tons of polyfilms and laminates. We have contemporary 3-layer and 7-layer blown film plants, 10 color flexographic printing machines and a rotogravure machine. The packaging unit is FSSC 22000 certified. The R&D department is engaged in the continual improvement of products and processes and indigenously develops innovative products to meet the emerging challenges of the industry. Some of IDMC's prestigious projects are design, supply, installation and commissioning of a fully automated 10 lakh liters per day milk processing plant for Jaipur Dairy. A fully automated continuous butter manufacturing facility of 150 metric tons per day capacity at Gandhinagar. UHT milk processing facility near Vijayawada. A 25 kiloliters per hour carbonated soft drink plant. A fully automatic dust-free 1000 tons per day cattle feed plant, which was Asia's largest when commissioned. A refrigeration plant for the Banas Dairy and a fully automated animal vaccine manufacturing plant with a capacity of 120 million doses of FMD vaccine, the world's largest when commissioned. Apart from a pan-India presence, IDMC exports equipment to Kenya, Bangladesh, Nepal, Nigeria and Yemen. IDMC's focus is on growing its business with the purpose of making a meaningful contribution to the emerging requirements of the food and dairy processing industry in India. In the days to follow, IDMC's Make in India initiative, a journey which actually began in 1978, will continue to be inspired by NDDB's philosophy and its core values of commitment, integrity, professionalism, credibility, innovation, and the principles of commercial prudence and financial viability. International Cooperative Day is an opportune moment to reflect upon the spirit of the cooperative movement in India. Imbibing the true essence of cooperation, more than 1 lakh pioneering women members are driving the growth story of Shrija Mahila Milk Producer Company, making it one of the largest women-owned producer organizations in the world. Shrija, which means the daughter of goddess Lakshmi, operates in Anantapur and Chittoor district of the drought-prone Rayalaseema region of Andhra Pradesh. Shrija has leveraged the principles of mutual assistance, which are largely the same as cooperative principles of the International Cooperative Alliance, combined with the liberal regulatory framework of the company law. The principle of voluntary and open membership is being followed at Shrija, wherein any women milk producer who has at least 1 cow or buffalo can become a member and shareholder in the organization. The voting rights of members in policy setting and decision-making process are independent of their shareholding in the organization. Shrija is democratically controlled by its members who actively participate in these processes. The board members are from amongst the producer members, and any member who passes the eligibility criteria can be elected as a board member in the organization. There is also a provision of appointing an expert director who is usually an industry expert. At the end of the financial year, producer members are paid bonus based on patronage over and above the payment of milk that they have supplied to the producer organization. Frequent training programs are organized for producer members and elected representatives so that they can contribute effectively towards the vision and mission of the organization.
It's a moment of pride for us that after establishing strong backward linkages, Shrija has successfully established forward linkages and launched a range of value-added products, which includes polypack milk, ghee, dahi, buttermilk, paneer, flavored milk and multiple other value-added dairy products. The organization has also achieved a turnover of 700 crores in the last financial year. It takes determination, hard work and conviction for an organization founded and promoted by dairy farmers to break into the big league. Unbelievable if this has been achieved in a decade. This is the story of Mahi, a farmer-producer organization which was started as a compelling need of dairy farmers from Saurashtra and Kutch region to market their surplus milk. What started out as a milk collection, pooling and chilling operation has today morphed into a large organization with strong backward and forward market linkages. Its secret of success? Blending consumer centricity with its nimble startup spirit. The democratically elected farmer board members have relied on simple management principles and the 4 Ps of marketing to bring Mahi to its current shape. मेरा नाम गंडेगा डेलिशा है। ये हमारा डोडो पार्लर है, अम्बा मिल्क पार्लर। मम्मी पापा का फैशन है। यहाँ पे शॉप पे यहाँ कस्टमर कई लोग पे आते हैं और हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं दूध के। મારું નામ સંચાણિયા સાગર છે। હું માહી કંપનીમાં 10 વર્ષથી જોડાયેલો છું અને કંપનીએ ઘણા એવા પ્રયત્નો કર્યા છે કે જે ઉન્નતિના શિખરો ઉપર છે। With over 7 lakh liters of daily milk collection, 1 lakh members, a 60 plus product SKU range, Mahi has earned a place amongst the top 20 producer organizations in India, and its journey has only just begun. મારું નામ ધવલ ભરતભાઈ રાઠોડ છે અને માહીની ક્વોલિટી વાઇઝ પ્રોડક્ટ બધી સારી છે। દૂધ, દહીં, છાશ અને અત્યારે લોન્ચ કર્યો શ્રીખંડ એ બી ફાસ્ટ ચાલે છે અત્યારે। On its 10th anniversary of incorporation, NDDB Dairy Services is proud to have partnered in Mahi's journey, and we reaffirm our commitment to building more such institutions towards making Bharat Atmanirbhar. मेरा नाम कमोद देवी यादव है और मैं 8-10 साल से संस्था 5 डेयरी में मेंबर बनी हुई हूँ और मेरे अकाउंट में ही पैसे आते हैं और अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे बचा कर रखती हूँ, एक साथ नहीं निकालती हूँ और थोड़ा थोड़ा निकालने के बाद में मैं मेरी आर्थिक स्थिति मतलब घर खर्चे में भी लगाती हूँ और ज़रूरत के अनुसार निकालती हूँ। और जैसे हम बच्चों को भी गुरुकुल स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल है आलियस्तड़ा वहाँ डाल रखा अच्छी स्कूल में। और जैसे हमारे पहले कच्चे मकान थे, इसी संस्था से, इसी डेयरी से मतलब पाइस से ही तो हमारी घर की स्थिति भी सुधारी। पहले प्रेस नहीं था तो प्रेस डलवाए, बनने की इच्छा थी तो मतलब मैं 12th पास कर ली थी। तो इस डेयरी में जुड़ने के बाद मैंने BA कर ली। यहाँ घर पर भी हमारे को सम्मान मिला, बाहर भी सम्मान मिले, घर पर भी सम्मान मिले और डेयरी में मतलब इज्जत भी बढ़ी हमारी। It began right here in Anna in 1946. Kheda district's dairy farmers, angered by exploitatively low prices of milk paid by the local private dairy, sought Sardar Vallabhbhai Patel's counsel. The Sardar advised them to unite and form a cooperative. Only then would they have control over their resources. Two villages came together to form a cooperative union under the leadership of Tribhuvandas Patel. The Bombay government refused to register the union,
the farmers did the unthinkable. They went on strike. "15 days of milk drought later, the Bombay government buckled. Cooperation had proved its mettle. India's first milk cooperative, Kheda Union, was born. By 1964, this small milk cooperative had become a movement. That same year, Prime Minister Lal Bahadur Shastri chose to spend a night in a village in Anand to understand the transformative power of this farmer-owned institution. Realizing the potential of cooperatives in the development of rural India, he established the National Dairy Development Board, NDDB, to spread the spirit of Anand throughout the country. Dr. Varghese Kurian was asked to lead NDDB in its mission. Thus, NDDB came into being to spearhead the journey that would change the landscape of rural India through dairying. But how can the spirit of Anand be multiplied? It required funds. It required skilled manpower. It required patience and resilience. But most of all, it required a vision. The vision was Operation Flood, launched in 1970, the world's largest food aid for development program. The ingenious plan: receive dairy commodities as a gift, sell them to local dairies, and invest the funds to create the infrastructure for cooperatives to procure, process, and market milk. By the end of Operation Flood in 1996, a national milk grid connected 72,000 village cooperatives to over 300 towns, cities, and metros. Linked to markets, milk became a source of livelihood for millions of small milk producers. To add value to the surplus milk and expand markets, NDDB developed a stream of new products and process technologies. Scientists at NDDB's lab developed affordable solutions for animal health, nutrition, and breeding. Training centers were set up to meet the manpower needs of the growing cooperatives. In a little over 2 decades, Operation Flood transformed India from a milk deficit nation to the world's largest producer of milk. By 1996, the Indian economy had been liberalized. Private players were now making inroads into the dairy sector too. A new challenge was emerging. NDDB's response was Perspective Plan, a 10-year strategy to equip cooperatives to face the future. The strategy was fourfold: strengthen business, enhance animal productivity, raise quality at all levels, and create a national information network to enable better planning and monitoring. By 2010, India's average growth rate in milk production was around 4% annually, outstripping the global average growth rate of around 2%. But the demand for milk has been increasing exponentially. To keep up with this ever-increasing demand, NDDB, with the support of the Government of India, envisioned a national dairy plan, Mission Milk, in 2012. This scientifically planned multi-state initiative with a 15-year horizon was largely funded by the International Development Association. In its first phase,
NDP focused on increasing productivity through scientific breeding and nutrition, with technologies being delivered at the farmer's doorstep. And the result has been quite outstanding. Milk production rose to a mammoth 163 million tons by 2017. And over 1.6 million milk producers across 177,000 villages have benefited from cooperatives. In addition to strengthening existing cooperatives, 5 producer companies were promoted, one each in Gujarat, Rajasthan, Punjab, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh. Suitable interventions were made in northwest Bihar, where dairy cooperatives did not succeed. Bapu Dham Milk Producers Company was formed, and milk is being procured from Champaran to provide milk producers with direct access to markets. In an endeavor to make dairying a source of sustainable livelihood and alleviate poverty in the drought-prone regions of Vidarbha and Marathwada, NDDB, along with the government of Maharashtra, have taken up dairy development activities with an outlay of about 3,000 million rupees over a period of 3 years. To replicate the success of WAMUL under NDDB's management, the government of Assam got into an agreement with the Dairy Board for the management of IAMUL and KAMUL as well. At the request of the government of Jharkhand, NDDB has assisted in forming the Jharkhand Milk Federation and has commissioned a fully automated dairy plant. NDDB assisted in revitalizing dairy cooperative movement in the state. To ensure a universal level of food safety and quality, NDDB has registered a quality mark logo to be given to those dairies that adhere to prescribed guideline parameters. Promoting the use of solar energy in the dairy industry is another initiative started by NDDB. Wholly owned subsidiaries started initially within NDDB to serve specific purposes have today evolved into significant entities on their own. Safal has been enhancing farm productivity through agronomic interventions, apart from providing market linkage for fruit and vegetable growers, ensuring remunerative prices. It has a state-of-the-art fruits and vegetables processing plant in Delhi and has recently set up a second plant in Ranchi. Apart from Delhi, Safal outlets have been set up in Bhubaneswar in collaboration with oil marketing companies. Furthermore, NDDB has partnered with the National Bee Board to explore possibilities of promoting scientific beekeeping among dairy farmers. From its inception in 1965, NDDB's purpose and vision remain constant: to serve India's small and marginal farmers and change the landscape of rural India. तो जब भी ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में हम खाना बनाते हैं और उसके ऊपर अमूल चीज़ आ जाए तो फिर मज़ा आ जाता है. So whenever we trek, अमूल ट्रैक्स with us. After I started putting Amul Mithai made in my Pongala, it was superb.
मन बल्ले बल्ले करता। Milk, giver of life and liberty, thanks to a revolution called Amul. The year 1946. Gujarat, the seat of an epic struggle. The air is rife with a cry for liberation. A revolution is in the making. A young man reared in the Gandhian tradition is in the Hello, thick check. of 1, nationalism, 2, 3, 4. organizing farmers. यहीं से शुरू हुआ. Hello, check. 1, 2, 3, 4. All guests are requested to take their seats, please. Hello, check. 1, 1. May just once again request all the people who are still standing to kindly take your seats. Please find a seat for yourself. Otherwise, requesting you all to please move to hall number 8, where you can take your seats. There's going to be a live feed happening there also. Just to apprise the August gathering, the Honorable Prime Minister has already landed. In another 5 to 10 minutes, he's going to be there in the premises and then joining us post the inauguration of the exhibition. He's then going to be joining us in the hall. तो सभी लोग जो साइड में खड़े हैं विशेष रूप से उनसे अनुरोध करना चाहेंगे, जो बीच में भी आयल में खड़े हैं उनसे निवेदन है सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपको यहाँ पर सीट नहीं मिल रही है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वॉलंटियर्स आपको गाइड कर देंगे। आप हॉल नंबर 8 में अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। As the Honorable Prime Minister arrives in the premises, he is going to be received by the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, along with our Honorable Union Minister, Shri Purushottam Rupala ji, our Honorable Ministers of State, Dr. L. Murugan and Dr. Sanjeev Banyan, and the other dignitaries receiving the Prime Minister. The Honorable Prime Minister is then going to be inaugurating the exhibition, having a walkthrough of the exhibition, and then joining us in the hall. As I mentioned, the Honorable Prime Minister has already landed. We're expecting him to be joining us in the hall in another 15 minutes. So just a request once again to the people standing, especially those standing at the back and in the aisles. Please find a seat for yourself. Be seated.
And just to request no movement in the hall now. Thank you again. Let me once again extend greetings to some of our honorable dignitaries who are present with us in this August gathering. We have the presence of the Honorable Minister from New Zealand, Ms. Fai Thiri, the Honorable Ambassador of Brazil, His Excellency Henry Arnaha, Honorable Ambassador of Netherlands, His Excellency Martin Wenden. We also have our Honorable State Ministers, Shri Dharampal Singh, the Honorable Minister of Animal Husbandry and Dairy Development, Government of Uttar Pradesh, Shri Radhakrishna P.K. Patil, the Honorable Minister of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries, Shri Ramlal Jat, the Honorable Minister of Revenue, Government of Rajasthan, and Engineer Teck Taki, the Honorable Minister of Animal Husbandry, Veterinary and Dairy Development, Government of Arunachal Pradesh. Ladies and gentlemen, joining on the dais now is our Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Government of India, Dr. L. Murugan. We have Dr. Mahesh Sharma, the Honorable Member of Parliament, Lok Sabha from the Gautam Budh Nagar. And as I mentioned to you, he is actually a physician by profession.
we also have other dignitaries who are going to be joining us shortly. They are presently with the Honorable Prime Minister. The Prime Minister is already in the complex paying a visit in the exhibition area, and he's going to be shortly be with us. Ladies and gentlemen, joining us here on the dais is Dr. Sanjeev Kumar Balyan, the Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Government of India. We also have Shri Surendra Singh Nagar, the Honorable Member of Parliament. And as you know, already on the dais is Mr. Cristiano Brazil, the President of the International Dairy Federation, along with Ms. Caroline Imond, the Director General, International Dairy Federation.
Just a request once again to the people who are standing, if you can please take your seats. If I can just request our representatives to please guide them to their seats, people who are standing. Joining us, ladies and gentlemen, on the dais is Shri Jitendranath Swain, President, Indian National Committee, IDF, and Shri Vinisha, Member Secretary, Indian National Committee, IDF.
Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, please join us in extending a heartfelt gratitude and welcome to the Honorable Prime Minister, the global charismatic leader, the champion of the earth, as he joins us for this inaugural session. Also, our good greetings to the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, and to Shri Purushottam Rupala ji, the Honorable Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India. Please be seated. Namaskar to everyone. Excellencies, ladies and gentlemen, a very hearty welcome to one and all, and a pleasure to be greeting and welcoming all of you to the inaugural session of the IDF World Dairy Summit. Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, and to Shri Purushottam. But today in 2022, as we stand here to welcome you all, we stand so very proud that today India is not only a milk self-sufficient country, but also the world's largest producer of milk. Further, ladies and gentlemen, the Indian dairy sector is growing almost double the rate as that compared to the world average, with a very unique self-sustainable model that provides livelihoods and supports the small farmers, the landless farmers, some 8 crore of them, eliminating the middlemen, giving them a regular source of income, and where women have been the key drivers of growth, they have been the main change makers in this sustainable model, and we stand so very proud of this cooperative model of the dairy sector. But then, ladies and gentlemen, further we all agree that world over, we all struggling to maintain a balance on 3 important dimensions of sustainability, that of economic, environment, and social sustainability. And thereby it becomes important towards viewing the dairy industry as a nucleus of other allied activities, the promise which it can bring towards addressing the food and the nutritional security, towards providing livelihoods to the people, and the promise towards protecting the environment. So as we discuss on this very important aspect for the global dairy industry, at the very onset, on behalf of all present here, on behalf of the entire global dairy industry, we would like to first thank the global charismatic leader, Honorable Prime Minister Modi, who has been a global beacon of change, transformation, adaptivity, someone who has been encouraging and promoting the traditional wisdom and knowledge, and at the same time, new technologies, innovations, and out-of-box thinking. He, ladies and gentlemen, has been a global crusader for economic, social, and environment sustainability, and under his dynamic leadership, today, India is marching ahead towards shaping a more inclusive, equitable, climate-sensitive, clean, green, Atmanirbhar growth for a happy, healthy, prosperous, and a globally competitive India. And at the same time, new technologies, innovations, and out-of-box thinking. He, ladies and gentlemen, has been a global crusader for economic, social, and environment sustainability. And under his dynamic leadership, today, India is marching ahead towards shaping a more inclusive, equitable, climate-sensitive, clean, green, Atmanirbhar growth for a happy, healthy, prosperous, and a globally competitive India. And as the entire dairy industry stands in letter and spirit with the Honorable Prime Minister's this vision and determination, on behalf of everyone, we would like to first thank, once again, let's, ladies and gentlemen, join in thanking the Honorable Prime Minister in leading this summit here. And may I request our Honorable Minister, Shri Purushottam Rupala ji, to kindly felicitate the Honorable Prime Minister with a shawl on behalf of everyone present here. And presenting this very special memento to the Honorable Prime Minister. This memento, ladies and gentlemen, is of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, who set India on the Milky Way. In fact, he advocated the farmers for setting up the cooperatives, and the cooperatives setting up their plants. The seeds which he sowed, we are reaping the fruits today. So let's begin, ladies and gentlemen, this summit as per our Indian traditions and customs by invoking the blessings of the Supreme Power.
And for that, we have the 4 students from Gurukul who are going to be rendering the Swasti Vachan. श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः सुभञ्जावानो विदधे गोजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोसस्तनो महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाजत्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मद्यारेकतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरादिति अंतरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंच जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मापयः पृथिव्यां पयः कदेको पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मयं मा। सर्वेभ्यो नमो नमः। Thank you for this auspicious beginning and infusing so much of positive energy of the air. A prayer towards wishing everyone's peace and prosperity. And ladies and gentlemen, as you are aware, the International Dairy Federation is headquartered in Brussels. It was established in the year 1903, and it has been the leading source of all technical and scientific information to the various stakeholders across the value chain of the global dairy sector. This is an annual conference which they have been organizing, and as we thank them for choosing this year India as the host, we are really grateful and delighted to have the President of IDF joining us, Mr. Cristiano Brazel, especially joining us from Brussels. So as once again thanking him, I now invite him for his words of welcome and his opening remarks. Mr. Cristiano Brazel, President, IDF. माननीय प्रधान मंत्री महोदय, इस डायरी शिखर सम्मेलन में आपकी गरिमाही उपस्थिति हमारे लिए गर्व की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, Chief Ministers Shri Yogi Ji and Shri Bhupendra Patel Ji, Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy Shri Parshatan Rupala, Minister of States Dr. Balia and Dr. Murugan, President of Indian National Committee and the Secretary Shri Swan, and dear Minesh Shah, and officers of NDDB, our dear Indian hosts, international guests, ladies and gentlemen, welcome to the IDF World Dairy Summit 2022. This is not ordinary opening.
This is the comeback of IDF World Dairy Summit after 2 years of recess due to the pandemic. This full auditorium, the extraordinary exhibition center, the quality of the crop program, panelists and public speak out about the unequal recovery capacity and resilience of the global dairy sector. And this makes me so proud, so enthusiastic about this summit and so optimistic about the future. I hinted it before, but now I'm sure our sector, all of you here present, are capable to overcome any obstacle, no matter how hard and challenging it is, and not only survive, but become even stronger. You will see it around this venue. You will hear in the multiple sessions that we'll have. You will learn it from the conversation and discussions from your colleagues and friends you will meet here after 2 years. Yes, we are stronger, we are wiser, and we are better. During these last 2 years, not did we only renew our long commitment with the noble purpose of nourishing the world with nutritious, healthy and sustainable foods, an activity that the dairy sector has been performing for thousands of years, since the beginning of the time. But we have also strived to do it under the most difficult circumstances, and we made it. Billions of people around the globe depend on the daily work of all us to keep production, processing and commercialization working in a changing world and environment. At least 1 billion people depend on the livelihoods we provide. And all together we manage to do so based on the determination, courage and consistency of millions of farmers, workers and traders from every corner of the world that never gave up, that never quit, that never escaped the risk of exposing themselves and their families to an unknown threat to the safety of their homes, but continued milking, processing, transporting and selling their products openly with the same quality and goodness to the consumers. We encourage you to download the IDF Annual Report 2021-2022 from our website to learn more about our achievements and join us for the closing session on Thursday before lunch. We have always known it, but as it usually happens in crises such as the one we dealt with in the past years, the insights and reflection you get from them make you more aware, more conscious and more responsible than ever. During these years, we doubled our efforts to produce safe, quality and affordable milk and dairy products in even more sustainable ways. We assumed new commitments in terms of carbon footprint and greenhouse gas emissions reduction, improving animal welfare and climate action that add up to the Dairy Declaration of Rotterdam adopted in the World Dairy Summit of Rotterdam 6 years ago. During these challenging 2 years, we launched the Pathways to Dairy Net Zero initiative with Global Dairy Platform and other organizations supported by larger numbers of farmers, processors and companies from around the world. And we started relevant discussions in multiple forums such as the UN Sustainable Food System, COP26 and the upcoming COP27. On Thursday, we will launch the revised IDF LCA methodology, the well-recognized tool to calculate greenhouse gas emissions in the dairy sector. IDF is proud to have led and supported the global dairy sector in this fascinating and challenging journey to the future. Everything like you are going to experience during these days is part of that support.
that commitment with the global dairy sector that has lasted for the last 190 years and will certainly last many more. As you will see, we are already managing and building the future of dairy. In the next few days, you will be inspired by leaders, farmers, and experts. We invite you to attend at the end of the day the IDF Dairy Innovation Hour ceremony. Dairy is part of a sustainable diet and food system. As former UN Secretary Ban Ki-moon said at the IDF WDS Summit 2018 in Daejeon, South Korea, milk is perfection. Milk is a complete food and rich source of important nutrients such as proteins, carbohydrates, vitamins and minerals in biologically available forms. And dairying provides livelihood and economic resilience to millions of people across the world. At the same time, the dairy sector is an essential contributor to the UN Sustainable Development Goals. We are so happy to be in India for this year's summit. Personally, also, I am really happy, considering that India is the largest producer of milk and considering the important role of milk in India, culture and economy. It makes perfect sense to bring our worldwide dairy community here for this timely learning and networking event. I would like to finish by thanking the National Dairy Development Board of India and the organizing committee, as well as to all the people that worked for almost a year for the fantastic job they have done in making this World Dairy Summit possible, the greatest annual event of the global dairy community. I also would like to extend a big thanks to all the people of the National Capital Region of Delhi and India for their hospitality. Honorable Prime Minister, Minister and authorities, members of the organizing committee and all participants in the summit, enjoy the summit, enjoy dairy. Thank you, sir, for your insights into this conference and the promise which this conference brings. And as you mentioned, the last 2 years have been really challenging for everyone because of the COVID. But if you see, the Indian dairy sector has continued to grow at an astounding rate. If we talk about our milk production growing at 6% as against 2% of the global industry. And this happens in spite of the VUCA effect, the volatility, uncertainty, complexity and ambiguity casted by the COVID. The Indian dairy sector has exhibited a very resilient growth. So growing and going forward, going ahead for more sustainable and resilient growth of the sector, we now invite the views and the guidance of our Honorable Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Shri Purushottam Rupala ji. I request and invite the Honorable Minister for his address. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड समिट में। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 48 साल के बाद भारत में आयोजित हो रहा है और वर्ल्ड समिट में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री श्री इस कार्यक्रम में मौजूद है। ये वर्ल्ड स्तर के मेले के लिए बहुत ही एक उपयुक्त संदेश आज यहाँ से होने वाला है। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल में मेरे दोनों सहयोगी डॉक्टर बालियान जी, डॉक्टर मुरुगन जी, हमारे सांसद श्रीमान शर्मा जी, वर्ल्ड डेयरी फेडरेशन के आदरणीय अध्यक्ष ब्राजीलिया, हमारे वर्ल्ड फेडरेशन के डीजी मिसेस कैरोलिना, हमारे सचिव महोदय स्वैन जी, इस सारे कार्यक्रम का आयोजन करने का जिम्मा जिनके कंधों पे हैं, हमारे एनडीडीबी के चेयरमैन श्रीमान मिनेश जी, मंच पर विराजमान हमारे एक और भी सांसद महोदय हैं जो आज सूट पैंट में इधर आए हैं, डेयरी के मालिक के रूप में श्रीमान सागर जी, और सभी हमारे गणमान्य अतिथि एंड ऑल द डेलीगेट्स फ्रॉम द अब्रॉड, आई वेलकम ऑल यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आप सभी का स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक करीबन 50 साल के बाद जब समिट हो रहा है, और जब 1974 में ये समिट यहाँ हुआ था, तब हमारा दूध का प्रोडक्शन 23 मिलियन था, और आज जब हम इस समिट को कर रहे हैं तो 220 मिलियन टन यानी कि 10 गुना दूध की वृद्धि। और आपका जो स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत का, जो 74 में दूध उत्पादन हो रहा था वो हमारी मांग के अनुरूप में कम था, और आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं। सो संपूर्ण आत्मनिर्भर अंग के रूप में आज आप यहाँ इस समिट की अध्यक्षता कर रहे हैं, बड़े गरिमा का विषय है। सब इस डेयरी का थीम है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। न्यूट्रिशन के लिए और रोजगारी के लिए, अपनी चलाने के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए डेयरी का क्या प्रयोजन है, उसी पर ये थीम पर ये समिट का आयोजन किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा सर, इसमें 24 जैसे सेशन होंगे जिसमें अलग अलग एक्सपर्टीज के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा, पैनल डिस्कशन होगा। 156 लोग इसमें अपनी बात रखेंगे, 156 लोग अपनी बात रखेंगे। इसमें से 89 लोग एब्रोड से आने वाले हैं, वो अपना विषय यहाँ रखेंगे। इसके जरिए मैं ये जताना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो डेलीगेट्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनको इन सारे एक्सपर्टीज के साथ अपनी बात को साझा करने का, समझने का, इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस को देखने का, समझने का बहुत सुंदर अवसर इस समिट के द्वारा हम मिल रहे हैं। हमारे देश में 8 करोड़ परिवार इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो दूध उत्पादन के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे देश में जो दूध उत्पादन होता है उसका मूल्य है 9.5 लाख करोड़। इतने मूल्य का दूध उत्पादन हम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इस अवसर का मौका लेते हुए ये ज़रूर बताना है कि आज़ादी के बाद हमारे देश के पशुपालन क्षेत्र को हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा जो ऐतिहासिक गिफ्ट दी गई है, एक तो इस विभाग को स्वतंत्र बना दिए, स्वतंत्र बनाकर 3 गुना बजट एलोकेशन कर दिया। ये विभाग के तौर पे हुआ, मगर देश के पशुपालन क्षेत्र में पूरे देश के पशुपालकों के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट 4000 मंजूर करके भारत सरकार की ओर से देश के पशुओं की हेल्थ के लिए सबसे बड़ा इंटरवेंशन हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ। करीबन 700 करोड़ रुपए की लागत से 4332 मोबाइल वेटरनरी यूनिट आपके निर्देशन में मंजूर किए गए हैं। आपने एक हेल्थ के रिलेटेड एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन लिया। उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री विराजमान हैं। आपने 11 सितंबर 19 को मथुरा से
पूरे देश के पशुओं को वैक्सीनेशन कराने का भारत सरकार के खर्चे से ऐलान किया था। एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन आपकी ओर से हो गया और 13,000 करोड़ रुपए की मातबर राशि का भी एलोकेशन आपने इसके लिए किया है। आपने जापान सरकार के साथ सहयोग करते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हमारे बड़े और पशुपालन से जुड़े हुए राज्यों को डेयरी डेवलपमेंट करने के लिए एक MOU किया हुआ है और इनके कारण इन दोनों प्रदेशों में आगे चलकर आप डेयरी के कारोबार को बढ़ाना के काम में हम योगदान दे पाएंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है सर कि इस डेयरी सेक्टर और कृषि सेक्टर को आपने जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है और आज आपकी गरिमामय उपस्थिति से पूरे विश्व में इस डेयरी का मैसेज जब देने वाले हैं, तब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि डेयरी की जब भी चर्चा होती है तो उसमें दूध ही आता है, दूध और दूध के रिलेटेड और चीज़ माखन घी वगैरह की बात होती है। अब आपके नेतृत्व में और आपके विजनरी मार्गदर्शन में गोबर में से भी प्रोडक्टिविटी करके, गोबर को भी क्रय करके उसका भी आमदनी किसानों को कैसे मिले, इनके लिए गोवर्धन योजना भारत में पहली बार आपके नेतृत्व में चल पड़ी है। और मैं बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अगली हमारे डेयरियों की जब AGM होगी तो उसमें दूध की आय के साथ साथ गोबर की आय का जिक्र भी होना शुरू हो जाएगा। मैं पिछले पखवाड़े हमारे गुजरात की एक बनास डेयरी के AGM में गया था तो वहाँ जिक्र हुआ था कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का गोबर खरीद करके कार्यक्रम को शुरू भी कर दिया है। सो दूध और गोबर दोनों को मिलाकर जब इसकी अर्थतंत्र पे इफेक्ट होगी तो मेरा नम्र ये मानना है कि देश की अर्थतंत्र को ये बहुत बल देने वाला कार्यक्रम होगा। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर आपके एक प्रशंसक ने मुझे कुछ पंक्तियां भेजी है, ये पढ़कर मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। उन्होंने कहा है, हिस्ट्री में हैव मेड प्राइम मिनिस्टर्स बट हियर इज हिस्ट्री मेकिंग प्राइम मिनिस्टर। उनकी बात बस ऐसी ही है कि सब कुछ हो गया है, ऐसी बात नहीं। उनकी बात बस ऐसी ही है कि सब कुछ हो गया है, ऐसी बात नहीं। खुशियों के कारनामे होते रहेंगे, ये बात है। फासले बहुत कम हैं, ऐसी बात नहीं। फासले बहुत कम हैं, ऐसी बात नहीं। वक्त वक्त पे मिलते रहेंगे, ये बात है। कंधे पे बोझ नहीं है, ऐसी बात नहीं। आत्मनिर्भर बनते जाएंगे, ये बात है। हम बार बार वार करेंगे, ऐसी बात नहीं, मगर दुश्मन डरते रहेंगे, ये बात है। राजा को नहीं प्रजा को माना, सिर्फ ऐसी बात नहीं। कर्तव्य पथ पर चलते रहेंगे, ये बात है। ये पंक्तियां आपको समर्पित करते हुए आपके नेतृत्व में जब भारत का अर्थतंत्र 6वीं पायदान से आगे बढ़कर 5वीं पायदान पर इंग्लैंड को पीछे रखते हुए विश्व के अर्थतंत्र के समक्ष एक बहुत ही शक्तिशाली अर्थतंत्र के रूप में उभर रहा है, आपके नेतृत्व में देश और दुनिया को भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनश्च आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंच पर विराजमान सभी महानुभावों का और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। और यहाँ पर उपस्थित सभी के जो भाव हैं, जो श्रद्धा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, उसे इन पंक्तियों के द्वारा यहाँ हमारे साथ साझा करने का बहुत बहुत धन्यवाद। And ladies and gentlemen, our Honourable Minister also highlighted the various conducive policies and environment which in the last 8 years we have seen the government taking it, bringing about a transformational change in the Indian dairy sector. And this year we are celebrating 75 years of our independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav.
In the last 75 years, if we see, we have been able to really cast impressive footprints and real massive footprints in the dairy sector. So we would now like to share with you and showcase this outstandingly remarkable and inspiring, transformational and progressive journey of the Indian dairy sector through a short film. And may I request our Honorable Prime Minister, sir, to kindly launch this film with a click of the remote and to declare the IDF World Dairy Summit 2022 open. India, the land of many regions, numerous languages, and 1.3 billion hearts. We look different. We speak different. We eat different. But what we wish is the same. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaha. May all be happy, may all be healthy. So that together we all stand in the spirit of Ek Bharat Shresht Bharat. And this spirit is truly exemplified with one emotion in every heart: milk. An emotion etched in our culture so deeply that without dairy, our daily life is unthinkable. Dairy consumption in India has evolved over time. The National Dairy Development Board implemented Operation Flood in the 70s, which made the cooperative model emerge as the backbone of India's mighty dairy sector. India has come a long way from being a milk deficit nation to becoming a self-sufficient nation in milk, largely produced by small and marginal farmers, which tells the success story of our hard-working farmers and reflects the strength of rural India. Since 2014, under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, India's dairy sector has flourished multifold. Milk production increased by more than 44% over the last 8 years, growing at an astounding rate of 6%, which is 3 times faster than the world average. Today, India contributes about 23% of the global milk production. To support the dairy sector, the Government of India, under the guidance of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, has implemented various schemes in the areas of milk production and processing, animal vaccination, dairy infrastructure development, animal identification system, etc. Recognizing the contribution of the sector in the Indian economy, a dedicated Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Ministry of Cooperation have been created. India's Nari Shakti and the dairy sector flourished hand in hand, helping over 60 lakh women milk farmers of the country to achieve economic independence and secure the future for the next generation. Through innovation and transformation, dairy found its multiple forms with products like ice creams, sweets, chocolates, ghee and paneer. Dairy added delight and nutrition to the lives of many. Now, India is all set to further expand the growth in milk production over the next decade. This could pave a way to ramp up exports. The government is setting up village-level dairy infrastructure under a national action plan on dairy development to increase the share of organized milk handling. Concentrated efforts are being made in the areas like smart animal management, digitalization, traceability, and economizing dung by promoting manure management. So, milk flowed over the years as different emotions. It's the hope for every Indian farmer. It's the nutritional delight of every Indian home. It's an emotion called milk. And that's why 100 million dairy farmers thank our Honorable Prime Minister for inaugurating the International Dairy Federation World Dairy Summit 2022. Come, let's raise a toast with a glass full of emotions, a glass full of milk.
So ladies and gentlemen, as we raise a toast to this flourishing Indian dairy sector with a glass of milk, I think we also agree that the dairy sector has a very vital role and responsible role towards the realization of the Sustainable Development Goals, especially SDG 1, 3, 5, 8 and 10. But then the advancement of these goals definitely require a very determined will and a leadership which is as global, which is as vocal for local as for global. And that is where, ladies and gentlemen, we now seek the views and the guidance of the global leader, our Honorable Prime Minister, whose charismatic leadership is today influencing the world. And someone who's always believed that this whole world is one big family, Vasudhaiva Kutumbakam. He's always worked with this very spirit. And that is the reason the views and the expressions, the progressive guidance of his today stands equally important to the Indian global sector as to the global dairy sector. So once again, as I thank Honorable Prime Minister on behalf of everyone present here, I now request Honorable Prime Minister Modi ji for his inaugural address. उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष प्री बजाले जी, IDF के डीजी कैरोलिन एमन जी, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभावी, देवी और सज्जनों, मुझे खुशी है कि आज डेयरी सेक्टर के दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और इनोवेटर्स भारत में एकजुट हुए हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों से आए हुए सभी महानुभावों का भारत के कोटि कोटि पशुओं की तरफ से, भारत के कोटि कोटि नागरिकों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य ना सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। मुझे विश्वास है ये समिट आइडियाज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और डेयरी सेक्टर से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आज का ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये भी संयोग है कि आज के इस आयोजन से भारत के 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसान भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह की समिट के लिए और उसमें लास्ट माइल बेनिफिशियरी हमारे ऐसे ही किसान भाई बहन होते हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अपने किसान साथियों का भी स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, पशुधन और दूध से जुड़े व्यवसाय भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी इस विरासत ने
भारत के डेयरी सेक्टर को कुछ विशेषताओं से सशक्त कर दिया है। इस समिट में दूसरे देशों से जो एक्सपर्ट आए हैं, मैं उनके सामने इन विशेषताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। साथियों, विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। भारत में डेयरी सेक्टर से जुड़े अधिकांश किसानों के पास या तो एक पशु है, 2 है या 3 पशु है। इन्हीं छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। आज भारत के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ये सेक्टर रोजगार मुहैया कराता है। भारत के डेयरी सेक्टर की यूनिकनेस आपको अन्य जगह पर शायद ही कभी कहीं मिल जाए। आज वर्ल्ड डेयरी समिट में इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की इस खासियत को एक और यूनिकनेस से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। हमारे डेयरी सेक्टर की दूसरी विशेषता है भारत का डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती हैं और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता और ग्राहकों से जो पैसा मिलता है उसका 70% से ज्यादा सीधा किसानों के जेब में ही जाता है। इतना ही नहीं, अगर मैं गुजरात राज्य की बात करूं तो ये सारे पैसे सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाते हैं। पूरे विश्व में इतना ज्यादा रेशियो किसी और देश में नहीं है। अब तो भारत में हो रही डिजिटल क्रांति की वजह से डेयरी सेक्टर में ज्यादातर लेन देन बहुत तेजी गति से होने लगी है। मैं समझता हूं भारत की डेयरी कोऑपरेटिव्स की स्टडी, उनके बारे में जानकारी, डेयरी सेक्टर में डेवलप किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया के बहुत से देशों के किसानों के बहुत काम आ सकता है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर की एक और बड़ी ताकत है, एक और यूनिकनेस है हमारी इंडिजिनस स्पीशीज। भारत के पास गायों की, भैंसों की जो स्थानीय ब्रीड है वो कठिन से कठिन मौसम में भी सरवाइव करने के लिए जानी जाती है। मैं आपको गुजरात की बन्नी भैंस का उदाहरण देना चाहूंगा।
ये बन्नी भैंस कच्छ के रेगिस्तान और वहां की परिस्थितियों से ऐसी घुल मिल गई है कि देखकर कई बार हैरानी होती है। दिन में बहुत ही भयंकर धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, कड़क धूप होती है। इसलिए ये बन्नी भैंस रात के कम तापमान में घास चरने के लिए निकलती है। विदेश से आए हमारे साथी ये जानकर के भी चौंक जाएंगे कि उस समय बन्नी भैंस के साथ कोई उसका पालक, उसका किसान उसके साथ नहीं होता है। वो गांव के पास बने चारगांव में खुद ही जाती है। रेगिस्तान में पानी कम होता है, इसलिए बहुत कम पानी में भी बन्नी भैंस का काम चल जाता है। बन्नी भैंस रात में 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर घास चरने के बाद भी सुबह अपने आप खुद घर चली आती है। ऐसा बहुत कम सुनने में आता है कि किसी की बन्नी भैंस खो गई हो या गलत घर में चली गई हो। मैंने आपको सिर्फ बन्नी भैंस का ही उदाहरण दिया है, लेकिन भारत में मुरा, मेसाना, जाफराबादी, नीली रवि, पंढरपुरी जैसी अनेक जात नस्लें भैंस की आज भी अपने अपने तरीके से विकसित हो रही है। इसी तरह गाय हो, उसमें गीर गाय, सहीवाल, राठी, कांकरेज, थारपारकर, हरियाणा, ऐसी ही कितनी गाय की नस्लें हैं जो भारत के डेयरी सेक्टर को यूनिक बनाती हैं। भारतीय नस्ल के ये ज्यादातर पशु क्लाइमेट कंफर्टेबल भी होते हैं और उतने ही एडजस्टिंग भी। साथियों, अभी तक मैंने आपको भारत के डेयरी सेक्टर की 3 यूनिकनेस बताई है जो इसकी पहचान है। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। लेकिन भारत के डेयरी सेक्टर की एक चौथी यूनिकनेस भी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती, जिसको उतना रिकग्निशन नहीं मिल पाता। विदेश से आए हमारे मेहमान संभवतः ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेन्स हैं, महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव्स में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट से जुड़ी सभी महानुभावों से भारत की नारी शक्ति की इस भूमिका को रिकॉग्नाइज करने, इसे विभिन्न वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पर ले जाने का भी मैं आग्रह करूंगा। साथियों, 2014 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोडक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है।
2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि। आज पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी रफ्तार 6% से भी ज्यादा है। भारत में दूध की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पूरे विश्व के औसत से कहीं ज्यादा है। बीते 3-4 वर्षों में ही भारत के छोटे किसानों ने बैंक खातों में हमारी सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों के खातों में भी आया है। साथियों, आज हमारा फोकस देश में एक संतुलित डेयरी इकोसिस्टम के निर्माण पर है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हमारा ध्यान दूध और उससे जुड़े उत्पादों की क्वालिटी पर तो है ही, बल्कि दूसरी चुनौतियों के समाधान पर भी है। किसान को अतिरिक्त आय, गरीब का सशक्तिकरण, स्वच्छता, केमिकल फ्री खेती, क्लीन एनर्जी और पशुओं की केयर, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यानी हम डेयरी सेक्टर को, पशुपालन को भारत के गांवों में ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ का बहुत बड़ा माध्यम बना रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोवर्धन योजना, डेयरी सेक्टर का डिजिटाइजेशन और पशुओं का यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, इसी दिशा में हो रहे प्रयास है। इतना ही नहीं, भारत ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने का जो अभियान चलाया है, वह एनवायरमेंट की दृष्टि से तो महत्व का है ही, लेकिन जो भी जीव दया में विश्वास करते हैं, जो पशुधन में उसके कल्याण में विश्वास करते हैं, उनको मालूम है कि प्लास्टिक पशुओं के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है, गाय और भैंस के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है। उस सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बंद करने का, खत्म करने का हमने बहुत लगातार प्रयास आरंभ किया है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर का जितना बड़ा स्केल है, उसे साइंस के साथ जोड़कर और विस्तार दिया जा रहा है। भारत डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रहा है। डेयरी सेक्टर से जुड़े हर पशु की टैगिंग हो रही है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से हम पशुओं की बायोमेट्रिक पहचान कर रहे हैं। हमने इसे नाम दिया है पशु आधार। पशु आधार के जरिए पशुओं की डिजिटल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, जिससे उनकी सेहत पर नजर रखने के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े मार्केट को विस्तार देने में मदद मिलेगी। साथियों, आज भारत का बहुत बड़ा फोकस पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमशीलता को, एंटरप्राइज को बढ़ावा देने पर भी है। डेयरी सेक्टर से जुड़े छोटे किसानों की ताकत को हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एकजुट कर रहे हैं। इनको बड़ी मार्केट फोर्स बना रहे हैं। अपने युवा टैलेंट का उपयोग हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स में स्टार्टअप्स के निर्माण में भी कर रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में बीते 5-6 साल में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में 1000 से अधिक स्टार्टअप्स बने हैं। साथियों, भारत किस तरह
अनोखे प्रयास कर रहा है, उसका एक उदाहरण गोबर धन योजना भी है। अभी हमारे रूपाला जी ने गोबर का इकोनॉमी में बढ़ता महत्व का वर्णन किया था। आज भारत में पशुओं के गोबर से बायोगैस और बायो सीएनजी बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारी कोशिश है कि डेयरी प्लांट्स अपनी जरूरत की अधिकतर बिजली गोबर से ही पूरी करें। इससे किसानों को गोबर का भी पैसा मिलने का रास्ता बन रहा है। इस प्रक्रिया में जो ऑर्गेनिक खाद बनती है, उससे किसानों को खेती के लिए एक सस्ता माध्यम मिल जाएगा। इससे खेती की लागत भी कम होगी और मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी। भारत में आज नेचुरल खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर भी अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है, जिसमें पशुओं की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं कि खेती में मोनोकल्चर ही समाधान नहीं है, बल्कि विविधता बहुत आवश्यकता है। ये पशुपालन पर भी लागू होता है। इसलिए आज भारत में देसी नस्लों और हाइब्रिड नस्लों दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की आशंकाओं को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, एक और बड़ा संकट पशुओं को होने वाली बीमारियों का है। पशु जब बीमार होता है तो एक किसान के जीवन को प्रभावित करता है, उसकी आय को प्रभावित करता है। ये पशुओं की क्षमता, उसके दूध और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों की क्वालिटी पर भी असर डालता है। इसलिए भारत में हम पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दे रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथियों, आज आपके बीच चर्चा करते हुए मैं डेयरी सेक्टर के सामने आई सबसे ताजा चुनौती का भी जिक्र करूंगा। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, पशुओं का वैक्सीनेशन हो या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी, भारत पूरी दुनिया के डेयरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने के लिए और सभी साथी देशों से सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। भारत ने अपने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी बहुत तेजी से काम किया है। आज भारत लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए एक ऐसे डिजिटल सिस्टम पर काम कर रहा है जो इस सेक्टर की एंड टू एंड एक्टिविटीज को कैप्चर करेगा। इससे इस सेक्टर में सुधार के लिए जरूरी सटीक जानकारी मिल पाएगी। ऐसी ही अनेक टेक्नोलॉजी को लेकर जो काम दुनिया भर में हो रहे हैं, उसको ये समिट अपने सामने रखेगी। इससे जुड़ी एक्सपर्टाइज को हम कैसे शेयर कर सकते हैं, इसके रास्ते सुझाएगी। मैं डेयरी इंडस्ट्री के ग्लोबल लीडर्स को भारत में डेयरी सेक्टर को सशक्त करने के अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की भी उनके बेहतरीन काम और योगदान के लिए प्रशंसा करता हूं।
आप सभी का, जो विदेश से आए हुए मेहमान का मैं फिर से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं एक लंबे अरसे के बाद, करीब करीब 5 दशक के बाद भारत को आप सबका स्वागत करने का मौका मिला, आप सबके साथ विचार विमर्श करने का अवसर मिला और यहां से जो मंथन से अमृत निकलेगा, इस हमारे अमृत काल में देश के ग्रामीण जीवन के अर्थतंत्र को विकसित करने में, देश के पशुधन के सामर्थ्य को और मजबूत बनाने में और देश के गरीब से गरीब के सशक्तिकरण में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। इसी अपेक्षा और आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your very inspiring and motivating address and guiding the entire global dairy industry. Thanking the Honorable Prime Minister for sharing also his experiential views, which comes from his working also at the grassroots level. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister shared with us the various initiatives which are being taken by the Government of India towards developing a more sustainable ecosystem for the dairy sector. Also, as he shared his experiential views with us, he guided the entire industry. Look forward for greater collaborations with the other countries, incorporating our traditional wisdom with the new technologies and modernizations. एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से फिर से धन्यवाद करते हुए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपना कीमती समय हमें देने का, साथ साथ हमारा मार्गदर्शन करने का। अनाज जी हमें संबोधित करेंगे। सभी हमारे मंचासीन अतिथिगण, अधिकारीगण माननीय प्रधानमंत्री जी को सी ऑफ करने गए हैं। उसके बाद एक बार फिर वो पुनः मंचासीन होंगे और हम अपना सत्र जारी रखेंगे। इसमें हमारे अति सम्माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी हमें संबोधित करेंगे। And I think all present here will agree, as the Honorable Prime Minister shared with us the richness and the uniqueness of the Indian dairy sector. He also brought in his own experiences, his experiential views. This is because Honorable Prime Minister has worked at the grassroots level. He's aware of the conditions at the grassroots level. He brings in with him a lot of traditional knowledge, wisdom, and that is where we have seen under his leadership a very holistic growth of the Indian dairy sector. As he further shared with us the various initiatives which his government is taking, especially towards protecting our animals, our environment. He's always, as I mentioned to you earlier, believed that this whole world is one big family. And all beings on this earth, it is our responsibility to take care of them, to protect them also. We humans have a greater responsibility, a shared responsibility with the other beings on this earth. And that is where he's always spoken about protecting the animals, of the environment, as we plan for our own growth. His guidance, his views, his margdarshan has always been very inspiring and motivating, and we are sure what he shared with you, it's going to be definitely benefiting each one of us. अब से थोड़ी देर बाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सम्माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हमें संबोधित करेंगे और
उसके बाद ये हमारा उद्घाटन सत्र समाप्त होगा। तो आपसे पुनः निवेदन कि आप स्थान पर ही बने रहें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये ब्रेक नहीं है, एक छोटा सा विराम हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे सभी मंचासीन अतिथिगण, अधिकारीगण, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को बाहर सी ऑफ करने गए हैं। उनके आते ही हम ये बाकी का सत्र जारी रखेंगे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के संबोधन के साथ। आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे, आज हमारा एक तकनीकी सत्र, जो चौथा तकनीकी सत्र है, शाम 6:15 पर, उसमें हमारे साथ हमारे माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री और कोऑपरेशन माननीय मंत्री श्री अमित शाह जी उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे, हमें संबोधित करेंगे, जिसमें हम रेलेवेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स इन द डेयरी सेक्टर उस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के माननीय सम्मानित मंत्रीगण भी होंगे, जो अपनी अपनी जो मॉडल्स हैं उनके देश में वो हमारे साथ साझा करेंगे, अपना व्यू पर्सपेक्टिव हमारे साथ साझा करेंगे। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक अवसर है हम सभी के लिए एक दूसरे से सीखने का, अपनी नॉलेज को, अपनी जानकारी को एक दूसरे के साथ साझा करने का, जिसे हम मिलकर एक विकसित डेयरी सेक्टर, ग्लोबल डेयरी सेक्टर बना सकें और अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें, साथ साथ विश्व की भी अर्थव्यवस्था और एक सुंदर विश्व का निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
Ladies and gentlemen, may I request you to kindly take your seats. We have our distinguished dignitaries once again joining us, gracing the dais. And we are now going to be having the address from the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. एक बार पुनः हम मंच पर आप सभी की तालियों के बीच स्वागत करते हैं अति सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी का। और पुनः स्वागत हमारे माननीय मंत्रीगण का, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी का, डॉक्टर संजीव बलियान, डॉक्टर एल मुरुगन और अन्य सभी अतिथिगण, अधिकारीगण। May I also request the President IDF, Mr. Bazale, to please join us. We already have the other dignitaries on the dais. सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण करें. May I request you all to kindly take your seats at the earliest possible, please. सभी से निवेदन करना चाहेंगे, विशेष रूप से जो खड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें जिससे हम अपना आगे का सत्र जारी रख सकें. We, ladies and gentlemen, seek your kind attention towards this session as we have the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, who is going to be addressing us now. May I request you all to kindly take your seats. If you can have your kind attention, little silence in the hall. As we share with you the uniqueness, the richness of the Indian dairy sector, ladies and gentlemen, the state of Uttar Pradesh today is the largest milk producing state in the country, the second largest dairy market in the country. It has been able to set a very unique, sustainable model for itself under the leadership of Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji. As we look forward to gain from each other's experience and unique models, this is an address, ladies and gentlemen, which is definitely going to be inspiring us and leading further to the growth of the global dairy sector. May I just request our representatives and volunteers, people who are just on the sides or they are closer to the exit gate, to kindly request them to move in. अपने volunteers, representatives से निवेदन करना चाहेंगे जो लोग बाहर की तरफ खड़े हैं, स्पेशली प्रस्थान गेट की तरफ, उनसे निवेदन है उनको प्लीज़ आप अशर इन कीजिए अंदर की तरफ. उनसे निवेदन है कि आप वह अपना स्थान ग्रहण करें. जो लोग बीच में खड़े हैं उनसे भी निवेदन, पुनः निवेदन कि अपने मोबाइल फ़ोन्स को प्लीज़ आप साइलेंट मोड या मीटिंग मोड पर रखें.
जो लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द आप अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे हम अपना आगे का सत्र ये शुरू कर सकें। Ladies and gentlemen, once again, a very humble request to everyone to kindly be seated at the earliest possible. We're just waiting for you to be seated and then start with the session. हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, यदि वो हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनको थोड़ा सा जल्दी बैठने को कहें। भाई मेरा अनुरोध है, प्लीज आप सब लोग बैठ जाएं जो डेलीगेट खड़े हैं, इस तरफ भी जो खड़े हैं, अंदर आओ सारे लोग, प्लीज अंदर आइए आप। यह व्यवस्था अच्छी लग रही, सब बैठे, क्या इंप्रेशन जाएगा। आप सब लोग प्लीज बैठें, ये आवाजाही जो है बंद कर दें एक बार। कोई बाहर जा रहा, कोई अंदर आ रहा, और इस तरफ जो है कोई वॉलंटियर होगा, कोई इन्हें अंदर लेकर आए सबको जो लेफ्ट हैंड पे खड़े हैं। आप सब लोग बैठिए प्लीज, थैंक यू। तो देवी सज्जनों, अब मैं सभी की तरफ से करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ हमारे माननीय यशस्वी अग्रणी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि अपने विचारों से, अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करने के लिए देवी सज्जनों श्री योगी आदित्यनाथ जी, रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर हिज एड्रेस। वर्ल्ड डेयरी समिट के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पशुधन एवं डेयरी मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, विभाग के राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी, विभाग के ही राज्य मंत्री
माननीय डॉक्टर एल मुरुगन जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, श्री सुरेंद्र नागर जी, अध्यक्ष IDF, DG IDF के इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष श्री जितेंद्र नाथ स्वयं जी, आज के इस वर्ल्ड डेयरी समिट में भाग लेने के लिए आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, भारत के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे किसान बंधु, पशुपालक और उपस्थित भाइयों बहनों, हम आभारी हैं भारत सरकार के, जिन्होंने 48 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश की इस धरती पर वर्ल्ड डेयरी समिट के आयोजन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आमदनी को दोगुना करने के इस अभियान को पशुधन के माध्यम से एक नई दिशा देने के उद्देश्य से वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश को चुना है। मित्रों, उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही देश में दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश 16% का शेयर रखता है। यानी अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि में इन आंकड़ों को प्रस्तुत करूं तो आज उत्तर प्रदेश 319 लाख मीट्रिक टन दुग्ध का उत्पादन करके देश के अंदर सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक राज्य के रूप में देश के सामने है। और इस दृष्टि से इस वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है। जो थीम वर्ल्ड डेयरी समिट का रखा गया है वह किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि के साथ ही रोजगार सृजन और पोषण की दृष्टि से डेयरी सेक्टर की प्रासंगिकता अत्यंत महत्वपूर्ण और सामयिक विषय है। पशुपालन क्षेत्र में वह तबका ज्यादातर है जिसने परंपरागत रूप से इस पेशे को अपनाया है, लेकिन जब हम उसे आधुनिक तौर तरीकों के साथ जोड़ते हैं, तकनीक के साथ जोड़ते हैं, तो उसकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में भी हम मदद कर सकते हैं। और इसीलिए भारत की जो परंपरागत सोच रही है कि यहां पर लघु और सीमांत किसान हैं, लघु और सीमांत किसानों की एक बड़ी संख्या अपने यहां खेती के साथ साथ पशुपालन को भी उसी महत्व के साथ आगे बढ़ाती है। उत्तर प्रदेश और पूरा देश इसी दृष्टि से दुनिया के अंदर सबसे बड़े उत्पादक, दुग्ध उत्पादक के रूप में अपने इन्हीं पशुपालकों और किसान बंधुओं की मदद से कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश संगठित क्षेत्र में आज 110
डेयरी का संचालन कर रहा है, जिसमें हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर की भी डेयरी प्लांट सम्मिलित हैं। प्रदेश में 20 दुग्ध सहकारी संघ और 8,600 से अधिक दुग्ध समितियों के माध्यम से 4 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक सदस्य भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश 9 ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट स्थापना की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है, जिन्हें अगले 1-2 वर्षों के अंदर हम लोग क्रियाशील कर पाएंगे। और मैं इसके लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से इस बारे में आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश के डेयरी सेक्टर में अपना सहयोग देकर के जो हमारी ये जो नई ग्रीनफील्ड डेयरी की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रहा है, इनके संचालन और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को अगर आगे बढ़ाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश राज्य में इससे कई गुना अधिक डेयरी सेक्टर को एक नई दिशा देने में हमें मदद मिल सकती है। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश पूरी तत्परता के साथ सहयोग करने को तैयार है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से सन 2019 में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर का कार्य शुभारंभ हुआ था। यह महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा संचालित दुग्ध उत्पादक संस्था है। इस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने बुंदेलखंड के झांसी को केंद्र बना करके बुंदेलखंड के 6 जनपदों में जो अपना कार्य प्रारंभ किया, यहां पर इनके वर्तमान में 4,000, इनके वर्तमान में वहां पे 41,000 सदस्य हैं। 795 गांवों में इनका कार्य है। प्रतिदिन 1,35,000 लीटर दुग्ध का ये लोग कलेक्शन करते हैं और इनका जो टर्नओवर है वर्तमान में 100 यानी लगभग 150 करोड़ रुपए का इनका वार्षिक टर्नओवर है, जिसमें इनको जो नेट प्रॉफिट होता है 13 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इस महिला उत्पादक संगठन को अकेले बुंदेलखंड में होता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दिशा से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक अत्यंत बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छा कार्य किया है और इस प्रकार के लगभग 4 अन्य मिल्क प्रोड्यूसर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित करने की कार्रवाई वर्तमान में गतिशील है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी तर्ज पर अन्य क्षेत्रों में भी हमें इस सेक्टर को मजबूती प्रदान करने और उसमें महिलाओं की सहभागिता के माध्यम से उसे गति देने में प्रदेश सरकार निरंतर कार्यरत है। प्रदेश ने अगले 5 वर्ष के अंदर नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत डेयरी सेक्टर में नए निवेश के लिए भी तमाम प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। खासतौर पर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो अपनी नई पॉलिसी बनाई है, इस पॉलिसी के अंतर्गत अनेक प्रकार के इंसेंटिव देने और देश और दुनिया में जहां कहीं भी डेयरी सेक्टर में अच्छा कार्य हो रहा है, उस कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य करने को तैयार है। भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत भी 300 करोड़ रुपए के कार्य वर्तमान में प्रदेश के अंदर स्वीकृत किए गए हैं।
योजना के अच्छे कार्यों के लिए प्रदेश को भारत सरकार का प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ है। ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट वाराणसी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की साझेदारी में वर्तमान में संचालित है। दुग्ध संघ वाराणसी के परिसर में 10,000 क्यूबिक मीटर क्षमता का एक बायो प्लांट भी स्थापित करने की कार्रवाई वर्तमान में संचालित है। प्रदेश ने जनवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन को प्रस्तावित किया है और इसके तहत उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी एक नीति तैयार की है और इसके तहत हम लोग डेयरी सेक्टर को, जो हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में किसानों और पशुपालकों के जीवन में परिवर्तन लाने, उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने, अधिक से अधिक रोजगार के सृजन के साथ ही प्रदेश में निवेश की एक बड़ी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इस तहत इस सेक्टर से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर के साथ हमारी अलग अलग चरणों में बातचीत चल रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आएंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने है, वह है निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की भी। राज्य सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। 6,600 से अधिक गौ आश्रय स्थल राज्य शासन के स्तर पर वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें 9 लाख से अधिक गौवंश का संरक्षण राज्य शासन के स्तर पर वर्तमान में उनका संरक्षण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने सहभागिता योजना के अंतर्गत भी लगभग 1.5 लाख गोवंश किसान और पशुपालकों को उपलब्ध करवा करके उत्तर प्रदेश उन सभी गोवंश के संरक्षण के लिए एक निश्चित धनराशि प्रत्येक पशुपालक को उपलब्ध करवाने का कार्य भी कर रही है। प्रदेश में वर्तमान में हम लोगों ने खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारी की रोकथाम करने के लिए हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 11 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के अंदर खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारी को रोकथाम करने के अभियान का शुभारंभ किया था। अब तक 84 लाख गौवंशीय पशुओं पर हम लोग टीकाकरण सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके हैं और ब्रुसेलोसिस रोग के टीकाकरण में भी लगभग 25 लाख से अधिक पशुओं को इसका टीकाकरण हम लोग प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने में अब तक हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के सहयोग से अपने अन्नदाता किसानों और पशुपालकों के उत्थान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए निरंतर कार्य कर रही है और इस दिशा में जो भी अच्छे प्रयास होंगे राज्य सरकार उन्हें प्रदेश के अंदर लागू करने में पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर मैं दुनिया से आए हुए सभी डेयरी सेक्टर में कार्य करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी डेलीगेट्स हैं, उन सब का और देश भर से आए हुए इस सेक्टर में कार्य करने वाले सभी अन्य महानुभावों का उत्तर प्रदेश की धरती में एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपार संभावनाएं डेयरी सेक्टर में निवेश की हैं, उस सेक्टर में राज्य सरकार उन्हें निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर सहयोग करेगी। आप यहाँ पर अगले
3 दिनों तक रह करके डेयरी सेक्टर में किए जाने वाले व्यापक सुधार और उस सेक्टर के विकास की विभिन्न उन सभी कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। आपके इस पूरे प्रवास के लिए और इस पूरे आयोजन के लिए मैं राज्य शासन की ओर से आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह आपका यह प्रवास निश्चित ही सफल होगा और डेयरी सेक्टर को एक नई दिशा देने में हम लोग इसे एक नई दिशा देने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सबका इस वर्ल्ड डेयरी समिट में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके विशेष उद्बोधन के लिए और उत्तर प्रदेश के डेयरी सेक्टर की जो आत्मनिर्भर प्रगतिशील स्वावलंबी विकास यात्रा है वो हमारे साथ साझा करने के लिए, साथ साथ आने वाले वक्त में जो आपकी सरकार के द्वारा जो अनेक पहल की जा रही हैं डेयरी सेक्टर के सतत और समावेशी विकास की तरफ, वो भी हमारे साथ साझा कर सभी का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके साथ देवी सज्जनों हम ये अपना उद्घाटन सत्र समाप्त करते हैं। वी नाउ conclude the inaugural session. Once again, thank you and deep regards to the Honorable Chief Minister, Shri Yogi Adityanath ji, to our Honorable Ministers, Shri Purushottam Rupala ji, to Dr. Sanjeev Balyan, to Dr. L. Murugan, thanking Honorable Members of Parliament, thanking IDF President, thanking Ms. Edmond. Thank you once again to each one of you. And we now break for lunch. Enjoy your lunch. Enjoy the hospitality of India, the form of the rich cuisine which we have to offer to all of you. And then post-lunch, we are going to be starting with our technical sessions. That's going to be happening in the adjacent hall. That's the Rathi Hall. This is the Gir Hall. The lunch is in the hall which is just next door on your right-hand side. And technical session 4 is going to be happening here in this hall, where Shri Amit Shah ji, the Honorable Home Affairs Minister and Cooperation Minister, once again joins us there. Thank you. Enjoy.